नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। बेहद खास मुद्दा आज आपके बीच लेकर आई हूं। मुद्दा केवल राजनीति का नहीं है, मुद्दा सेना के शौर्य से जुड़ा हुआ है। मुद्दा राष्ट्रीय अस्मिता, राष्ट्रीय सम्मान से जुड़ा हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने जो शौर्य का परचम लहराया, जिस तरीके से आतंकियों के गढ़ में घुसकर उनको निस्तानाबूद किया गया, और इसके बाद विपक्ष के वो पाकिस्तानी बोल, कितने रफाल गिरे, कितने आतंकी गिरे, कहां क्या हुआ, इन सभी सवालों का जवाब आज लोकसभा में दे दिया गया। लोकतंत्र का मंदिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दो टूक शब्दों में कह दिया है कि हमने वो किया जिसका हकदार पाकिस्तान है। गढ़ में घुसकर सेना ने 100 आतंकियों को ध्वस्त किया, 100 अड्डों को ध्वस्त किया, 100 आतंकी मारे गए और हमारा एक भी नुकसान नहीं हुआ है। साफ तौर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि सुदर्शन चक्र उठ चुका है। हम शेर हैं, शेर मेंढक की बराबरी नहीं करते हैं, यानी पाकिस्तान को मेंढक कहा और भारत शेर, सेना का शौर्य, पराक्रम, शूरता। लेकिन इन सब के बीच में फिर वही राग, फिर वही तस्वीर विपक्ष ने सामने रखने की कोशिश की। एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की शुरुआत हो चुकी है। 16 घंटे लोकसभा में चर्चा होनी है, 9 घंटा राज्यसभा को दिया गया है। लेकिन विपक्ष की तरफ से, विपक्ष के बड़े नेताओं की तरफ से, खासतौर से कांग्रेस के सीनियर लीडर, इस देश के पूर्व गृह मंत्री और वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने कुछ ऐसा कहा जो एक बार फिर से विपक्ष को कटघरे में खड़ा करता है। पी चिदंबरम कहते हैं कि ये कौन कह सकता है कि आतंकी पाकिस्तानी थे। यानी ये सवाल पूछकर आपने न केवल हमारे देश की सुरक्षा एजेंसियों पर शक किया, न केवल आपने सेना के शौर्य का अपमान किया, बल्कि आपने देश की अस्मिता पर भी बड़ा प्रहार किया है। क्यों ऐसा हो रहा है कि बार बार सत्ता विरोध, मोदी विरोध करते करते कांग्रेस और समस्त विपक्ष पार्टियां राष्ट्र का विरोध करने लगती हैं? क्या विपक्ष की ये नीति, कांग्रेस की ये नीति उनके लिए सेल्फ गोल नहीं हो रही है? आज इसी पर करेंगे खुलकर बात। हमारे साथ सभी अतिथि जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय कराऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं सबसे पहले आपको वो बयान सुनाना चाहती हूं जो आज लोकतंत्र के मंदिर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दो टूक शब्दों में न केवल विपक्ष को बड़ा जवाब दिया, बल्कि पाकिस्तान को भी उसकी औकात एक बार फिर से याद दिला दी। पहले बयान। 71 के युद्ध में, 71 के युद्ध में जब हमने पाकिस्तान को सबक सिखाया, उस समय की सरकार को मैं बधाई देना चाहता हूं। हमने अपने राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व की प्रशंसा की। हमने ये नहीं देखा कि किस दल की सरकार है, किस विचारधारा की सरकार है, इसकी चिंता नहीं की कभी। हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने संसद में खड़े होकर उस समय के नेतृत्व की प्रशंसा की थी। हमने कभी, हमारे प्रतिपक्ष के लोग ये पूछते रहे हैं कि हमारे कितने बीमार गिरे। मुझे लगता है उनका यह प्रश्न हमारी राष्ट्रीय जनभावनाओं का सही से प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है। मुझे लगता है उन्होंने एक बार भी हमसे यह नहीं पूछा कि हमारी सेनाओं ने दुश्मन के कितने विमान मारे गिराए। यदि उन्हें प्रश्न पूछना ही है अध्यक्ष महोदय, तो उनका प्रश्न यह होना चाहिए, क्या भारत ने आतंकवादी ठिकानों को तबाह किया? तो उसका उत्तर है हाँ। मैं विपक्ष के, हमारी नीति है आतंकवाद के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करना। हमारा पाकिस्तान विरोध उनकी आतंकवाद की नीति के कारण है, इसलिए पाकिस्तान से हमारा विरोध है। अध्यक्ष महोदय, हम अगर शांति की आशा के लिए हाथ बढ़ाना जानते हैं, तो अशांति फैलाने वाले हाथों को उखाड़ना भी जानते हैं। तो एक तरफ संसद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जब ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार का पक्ष रख रहे थे, उस दौरान ही ऑपरेशन महादेव के तहत
पहलगाम के पापियों को सेना ने 72 हूरों के पास पहुंचा दिया। जो लोग ये पूछ रहे थे कि आखिर कहां गए वो आतंकी, उन्हें आसमान निगल गया या धरती खा गई, उनको आज जवाब सेना ने दे दिया है। अबू मूसा जो इसका मास्टरमाइंड था, टीआरएफ जिसका नाम बार बार आ रहा था, वो सभी आतंकी 72 हूरों तक पहुंचा दिए गए हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि लडवास में अभी भी ऑपरेशन महादेव जारी है, क्योंकि ये वो इलाका है जहां पर लश्कर के कुछ और जो आतंकी हैं उनके छिपे होने की संभावना व्यक्त की थी। पहले ही सेना की तरफ से ये संभावना व्यक्त कर दी गई थी। तो एक तरफ सेना का शौर्य जारी है, दूसरी तरफ सरकार ने अपनी बातें रख दी है, तीसरी तरफ विपक्ष के सवाल। क्या ये सवाल देश विरोधी नहीं है? क्या ये सवाल पाकिस्तान को बल नहीं देते हैं? और क्या ये सवाल देश की अस्मिता के लिए, आने वाले समय के लिए खतरनाक नहीं साबित हो रहे हैं? इन सभी सवालों पर जवाब चलिए ढूंढने की कोशिश करते हैं रण क्षेत्र में। आज के मेहमानों के साथ स्वागत करते हैं। स्क्रीन पर सभी मेहमान आ चुके हैं। जाने माने रक्षा विशेषज्ञ वीर चक्र प्राप्त टीपीएस त्यागी सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जय हिंद सर, बहुत बहुत स्वागत है। जाने माने पॉलिटिकल एक्सपर्ट सुरेंद्र स्वामी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है सर, जय हिंद। और साथ ही साथ पॉलिटिकल बॉडीज, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए रमाकांत मिश्रा जी और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए वाचस्पति द्विवेदी जी जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। मैं अपनी पॉलिटिकल बॉडीज के साथ, आज के प्रतिनिधियों के साथ ये चर्चा शुरू करूं उससे पहले मैं टीपीएस सर आपके पास आना चाहती हूं। अभी 24 घंटे भी नहीं बीते, मैं कल तक करगिल में मेरी उपस्थिति थी और मैंने वहां पर जाकर महसूस किया कि राष्ट्र सर्वोपरि की भावना होती क्या है। हम कहते हैं ना कि राष्ट्र सर्वोपरि की भावना हमारा टैगलाइन है, लेकिन उसे महसूस मैंने किया है वहां बीते हुए 72 घंटे। एक एक सांस भारी पड़ती है, लेकिन ऐसी विकट परिस्थितियों में टाइगर पॉइंट पर पहुंचकर पॉइंट 5353 को आज भी हम चुनौती दे रहे हैं। दुश्मन जहां पर मेरी मौजूदगी थी, हम सैंडो टॉप पहुंचे और हमने देखा कि इतनी कठिन परिस्थितियों में भी सेना वहां पर दुश्मनों से मोर्चा लेने के लिए तैयार खड़ी हुई है। करगिल वॉर के हीरोज को याद किया जा रहा था, ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा हो रही थी। ये सारा जब परिस्थितियां आती हैं, जब हम राष्ट्र सर्वोपरि की भावना की बात करते हैं, उसे महसूस करते हैं, और उसके बाद दिल्ली लौटते ही संसद की इस कार्रवाई में जो विपक्ष की भाषा थी वो वाकई दुखी करती है। क्या आपको नहीं लगता कि विपक्ष के ये बोल सेना का मनोबल गिराते हैं, सेना का अपमान करते हैं? क्या विपक्ष को ये बात समझ में नहीं आती? बिल्कुल सही सवाल पूछा है आपने लावणी जी। मैं आपको ये बता दूं कि सिपाही के लिए आपके दिए हुए पैसे की आवश्यकता नहीं है। हमें किसी से इतनी सी भी मदद नहीं चाहिए, ना आर्थिक चाहिए, ना ही किसी और तरह की चाहिए। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि कम से कम हमारे सिपाहियों का मनोबल ना गिराए। हमारे सिपाहियों का मनोबल गिरता है जब यहाँ के लोग पाकिस्तान की भाषा में बात करने लगते हैं। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारे प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि एवरी एक्ट ऑफ टेरर will be taken as an act of war। अब एक्ट ऑफ टेरर के अंदर ये केवल पाकिस्तान के लिए नहीं था, ये इंटरनली भी था। यानी कि हिंदुस्तान में अब तक तो वो लोग बच गए ये कहने के बाद भी कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी, या ये कहने के बाद भी कि हिंदुस्तान की सेना तवांग में चीन से पिट के आ गई। लेकिन अब नहीं बचेंगे, क्योंकि यूपा यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंटिव एक्ट के अंदर जितने अपराध हैं उन अपराधों को एक्ट ऑफ टेरर माना जाएगा। और एक्ट ऑफ टेरर का मतलब उनका जो पनिशमेंट है वो एक्ट ऑफ वार से होगा। तो अब ये ना समझा जाए कि हम पॉलिटिकल हैं, हमारा किसी पार्टी से जीरो भी मतलब नहीं। लेकिन इदम्बरम हो या चिदम्बरम हो, ये व्यक्ति जो इस तरह के सवाल पूछेंगे कि हमें बताया जाए कि जो आतंकी थे उनका पाकिस्तानी होने का क्या सबूत है, मुझे लगता है कि इनसे पूछा जाए कि इनका हिंदुस्तानी होने का क्या सबूत है, और फिर सरकार एक्शन ले या ना ले। जो आज के पूर्व सैनिक हैं वो भी जनाब पढ़े लिखे हैं,
वो बाकायदा टीवी देखते हैं, टेलीविजन देखते हैं, उन्हें अपने नेताओं के आचरण और भाषण का पता लगता रहता है। और जो आज के सरहद के ऊपर तैनात सैनिक है वो हमारे पूर्व सैनिकों के ज्यादातर बच्चे ही हैं, लिहाजा उनकी आवाज उठाना हमारी जिम्मेदारी है और हम अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए अब ऐसे लोगों का सार्वजनिक स्थानों पर सामूहिक बहिष्कार करेंगे। बिल्कुल, ये बड़ी बात आपने कही है सर। समय की थोड़ी सीमाएं, इसलिए मैं सभी अतिथियों से कहूंगी कि आज थोड़ा जल्दी जल्दी गागर में सागर भरिएगा। लेकिन वाचस्पति जी देखिए, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। टीपीएस सर ने कहा कि आचरण और भाषण ये बहुत मायने रखता है और आपका एक एक जो सवाल होता है, आप सरकार से खूब सवाल पूछिए, आपको अधिकार है, लेकिन सवाल पूछते पूछते सेना के शौर्य को अपमानित मत कीजिए। क्या कहना चाहते हैं पी चिदम्बरम साहब आखिर ये कह के कि कौन कह सकता है कि पाकिस्तानी थे कि नहीं थे? जवाब आप लोग जानना चाह रहे थे कि क्या हुआ पहलगाम के आतंकियों का, कि आसमान निगल गया या धरती खा गई? तो आज 72 हुरों के पास हमारी सेना ने उन्हें पहुंचा दिया है। ये जानकारी आपको होगी जरूर। तो ऐसे में क्या आपको नहीं लगता कि आप लोगों को भी सवाल पूछते समय कुछ मर्यादा रखनी चाहिए? वाचस्पति जी, वाचस्पति जी को क्या मेरी आवाज पहुंच रही है? मुझे लगता है शायद वाचस्पति जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंची। रमाकांत साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आइए सुरेंद्र स्वामी जी के पास जरा चलती हूं। स्वामी जी देखिए, हमारे देश की राजनीति की ये विडंबना ही है कि मुद्दों का चयन, विपक्षी पार्टी का खास तौर से मैं कहूंगी कि मुद्दों का चयन वो कर तो लेते हैं, लेकिन उन मुद्दों से जुड़े हुए सवालों की तैयारी शायद सही से नहीं हो पाती। और आज 55 मिनट से ज्यादा के पूरे अपने वक्तव्य में राजनाथ सिंह ने यह बता भी दिया, रक्षा मंत्री ने कहा कि रिजल्ट देखा जाता है, यह नहीं देखा जाता कि पेंसिल की नोक टूट गई या रबड़ नहीं था। ये तैयारी इनकी नहीं थी और इसीलिए ये सवाल ऐसे पूछते गए जो सीधे सीधे सत्ता विरोध के बजाय देश विरोध हो गया। सुरेंद्र स्वामी जी। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं और हमें तो अब धीरे धीरे ये लगने लगा है कि जो ये विपक्षी गठबंधन है ये वोट बैंक की राजनीति नहीं कर रहा है, बल्कि ये गजवाए हिंद की राजनीति कर रहा है। ये इस देश में जो भारत की चुनी हुई सरकार है उसको हटाना चाहता है, वो सनातन को खत्म करना चाहता है, वो राष्ट्रीयता को खत्म करके इस देश को टुकड़ों में खंडित करना चाहता है। और इसीलिए उसका कोई भी कदम वो नहीं है जो इस देश की एकता और अखंडता की कोई भी उसमें आपको आभास होता है, एहसास होता है कि देखिए ये स्टेटमेंट दिया है विपक्ष के नेताओं ने, ये हमारे देश को मजबूत करेगा। तो इसलिए एक तो मैं समझता हूं कि पॉलिटिकल पार्टीज को अब उस नैरेटिव से बाहर निकलना चाहिए कि भाई ये वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, ये वोट बैंक की राजनीति नहीं कर रहे हैं, ये खुल्लम खुल्ला गजवाए हिंद की राजनीति कर रहे हैं। ये हिंद जो यहाँ पे जो मौजूदा जो पिछले 11 साल में एक कहना चाहिए जो सनातनी राज आया, और आपको तो मालूम ही है कि कांग्रेस के तो अध्यक्ष ने ही कहा था कि अगर मोदी चुनाव जीत गए तो सनातन का राज आ जाएगा। अब सनातन के राज से इनको क्या परेशानी है? लेकिन जो भगवा आतंकवाद कह सकता हो तो उसकी सोच तो उसी वक्त समझ में आ गई थी। ये वही पी चिदम्बरम साहब है जिन्होंने भगवा आतंकवाद की थ्योरी गढ़ दी थी और इसीलिए इस सनातनी सोच से शायद ये नफरत। तो संसद में भी चर्चा लगातार चल रही है ऑपरेशन सिंदूर पर और इस वक्त विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इस पर बोल रहे हैं। आइए सीधे लिए चलते हैं आपको सदन की कार्रवाई की तरफ। टू ब्रिंग टू जस्टिस दोज हु परपेट्रेटेड दिस अटैक एंड आई एम ग्लैड टू से Speaker sir, and I hope that this is appreciated and recognized by the House. If you look at the Security Council statement of 25 April, the members of the Security Council condemned in the strongest terms the terrorist attack. They affirmed terrorism in all its forms and manifestations constitute one of the most serious threats to international peace and security, and most important, the Council underlined the need to hold the perpetrators, organizers, financiers, and sponsors of this reprehensible act of terrorism accountable and bring them to justice. I highlight this, Speaker sir, because this statement of the UN Security Council resonated throughout the international community. So when many honorable members asked today, where was the world on Pahalgam?
I think the answer is there. The answer is there in a Security Council statement which says hold them accountable, bring them to justice, and that is exactly what we did through Operation Sindoor. Now, I also want, Honorable Speaker, sir, through you, to bring to the attention of the House a very interesting development pertaining to the TRF, the Resistance Front. When the Security Council was debating this on the 25th of April, and TRF had twice claimed responsibility for the Pahalgam attack, Pakistan defended the TRF. Pakistan tried to get any mention of TRF excluded, and in fact the Pakistani foreign minister told his parliament that this is a great diplomatic achievement. Now, I mention it because today, again thanks to our diplomacy, the TRF has been designated as a global terrorist organization by the US government, and the same Pakistani foreign minister who took so much pride saying I defended the TRF says, well, now if the US has done this, we accept it. So that is where the Security Council issue stood. If I could then, sir, move on to the diplomacy from 25th of April till the commencement of Operation Sindoor. During this period, there were obviously a number of phone calls, a number of conversations. At my level, there were 27 calls. At Prime Minister, I think almost 20 calls. About 35, 40 letters of support came in. And what we tried to do was to create a narrative, prepare the diplomacy for the launch of Operation Sindoor. And the result of that diplomacy, Honorable Speaker, sir, there are 193 nations of the members of the United Nations. 193. Only 3, apart from Pakistan, opposed Operation Sindoor. Only 3. If you look through this period, and I would be very happy to share with the House the exact positions of various governments, overwhelmingly, there was recognition that terrorism is unacceptable, that a country which has been attacked has a right to defend itself, and that India was doing exactly that. Now, when Operation Sindoor was launched, we spelled out our objectives. There was a statement, Honorable Raksha Mantri ji referred to it in his statement, where we put out for the benefit of our own people, for the international community, that Operation Sindoor was hitting the terrorist infrastructure in Pakistan and Pakistan occupied Jammu and Kashmir, from where terrorist attacks had been planned and launched. We highlighted that 9 sites had been targeted, and we said that our actions are focused, measured, and non-escalatory in nature. And we were living up to the commitment that those responsible for this attack will be held accountable. This was the commitment which was endorsed by the UN Security Council thanks to our diplomacy. It was a commitment made by the Prime Minister to the people of India that we would hit those symbols, those sites, those planning places. So today, when I hear many questions from across the aisle, I want to say, which one of you imagined that Bhavalpur and Muridke would be brought down the way it was? Which one of you thought? When did you even think of it during your tenure? Did it even cross your mind? In fact, on the contrary, you ruled it out after 26/11. So, I think our objectives are very clear. We wanted to send a message to the terrorists. We wanted to send a message to Pakistan that do not continue this support for terrorism. And I think on the morning of 7th of May, that message went home loud and clear. Now, sir, during this period, there was, when the operations were on, when the conflict, when the activities were on, operation is still continuing. A number of countries, number of their leaders, ministers, others called up. And they called up because people wanted to know what is happening. People wanted to know what is the thinking of India. People wanted to understand what we are doing.
And I would like to share with the House, sir, through you, to everybody, we gave a common message. The common message was India is exercising its right to defend itself against terrorism. Number two, the targets which were hit on the 7th of May are known terrorist headquarters and infrastructure. Number three, there will be no mediation. Anything between us and Pakistan is bilateral. Number four, we will never bow down to nuclear blackmail. Number five, we are responding to Pakistani military attacks because after Operation Sindoor was launched, they had started targeting our military facilities. And we will continue to hit the Pakistani military. If the fighting is to stop, Pakistan must request it. And that request must come through the designated channel of DGMOs. This was a common message that we had given to many people who had called us during that period. Our position was very, very clear in how we were approaching the progress of Operation Sindoor. Now, sir, many members asked, some out of genuine curiosity, some perhaps less, what was the international support? How much international understanding was there of India's position? I would like to share with you a sample. So let me start with countries who are known to be partners of India. Quad. Quad gave a statement which says the Quad unequivocally condemns all acts of terrorism and violent extremism in all its forms and manifestations, including cross-border terrorism. We condemn in strongest terms the terrorist attacks in Pahalgam on 22 April and call for perpetrators, organizers and financiers of this reprehensible act to be brought to justice without any delay. Now, sir, this is the Quad. Now, let us look at a different grouping, BRICS. Now, BRICS has China as a member, Russia as a member, it has Iran as a member, Brazil, South Africa, Egypt. BRICS also condemned the April 22 attack. It reaffirmed its commitment to combating terrorism, again including cross-border terrorism. Now, I would like members of this House to understand, if India is attacked, if there is a terrorist attack on India and a country says we condemn cross-border terrorism, I think it is obvious to everybody what that cross-border terrorism is. So, I then move on, sir, to the Central Asia. The Central Asian countries opposed providing safe haven using terrorist proxies for cross-border terrorism, for terror financing. Now, I can cite statements from the Indian Ocean Rim Association, from individual countries, range of them. President Putin, for example, has said, he wrote to our president and said this brutal crime has no justification whatsoever and its perpetrators will face a deserved punishment. The President of Paraguay has said that he expresses solidarity and recognized India's legitimate right to self-defense. So the main point, the common thread, sir, which I would like to bring out is that number one, cross-border terrorism across the board has been recognized, all forms and manifestations, opposition to condemnation of Pahalgam terrorist attack, and the right of India to bring people to justice. Now, sir, in addition to that, I would particularly like to mention 2 or 3 other developments. One, the American designation of TRF. On the 17th of July, the Department of State designated TRF as a foreign terrorist organization and a specially designated global terrorist. Now, this comes in the wake of the extradition of Tahawur Rana, who was involved in the 26/11 attack. And when people ask today, how successful is your foreign policy? Where is your diplomacy? I want to say that Tahawur Rana
which many of you tried for so long to get, is finally here because of us. I want to say TRF was designated not because somebody out there made a remark. TRF was designated as a global terrorist organization because our diplomacy persuaded another country to do that. Now, our strong stance has resonated across the world. I was some time ago in Germany, and standing next to me, the German foreign minister said, India has every right to defend itself against terrorism, and Germany will support this fight against terrorism. Similar position has been taken by France, similar position has been taken by the European Union. So, what I would like to highlight, sir, is that today, where Operation Sindoor is concerned, there has been, the world sees what it is about. The world realizes this is a fight against terrorism. It is felt that India has acted responsibly but firmly. Now, I would like, sir, to address one particular aspect because some members have brought it up. And this is regarding the US activity during this period. Sir, I'd like to inform the House that on the 9th of May, Vice President J.D. Vance called the Prime Minister, warning of a massive Pakistani attack in the next few hours. Prime Minister, in his response, made it very clear that if such an attack happens, it would meet with an appropriate response from our side. Now, sir, that attack took place and was foiled by our armed forces, and I think the House should collectively appreciate the performance of the armed forces in foiling what was a massive attack on the 9th and 10th of May. Now, our response, which the Prime Minister promised, was delivered, and it was delivered with devastating effect. I don't have to say anything. Every member has seen satellite pictures of Pakistani airfields. You can see from the state of those airfields, which shown by the pictures, what was our answer. Now, on the 10th of May, we received phone calls sharing the impression of other countries that Pakistan was ready to cease the fighting. Our position was, if Pakistan was ready, we needed to get this as a request from the Pakistani side through the DGMO channel. That is exactly how that request came. Now, I want to make two things very clear, sir. One, at no stage in any conversation with the United States was there any linkage with trade and what was going on. Secondly, there was, please listen. Secondly, there was no call between the Prime Minister and President Trump from the 22nd of April, when President Trump called up to convey his sympathy, and the 17th of June, when he called up Prime Minister in Canada to explain why he could not meet. So I would again, मैं इसको दोहराता हूँ, 22 अप्रैल से 17 जून तक। माननीय अध्यक्ष जी, मेरी एक बात की आपत्ति है, भारत देश का शपथ लिया हुआ विदेश मंत्री यहाँ स्टेटमेंट कर रहा है, उस पर भरोसा नहीं है, उनको किसी और देश पर भरोसा है। मैं समझ सकता हूं उनकी पार्टी में विदेश का महत्व क्या है, मगर इसका मतलब ये तो नहीं है पार्टी की सारी चीजें यहाँ सदन में आकर थोपे। भारत के विदेश मंत्री पर भरोसा नहीं करोगे? ओथ लिया हुआ व्यक्ति यहाँ पर बोल रहा है, ही इज रिस्पॉन्सिबल। माननीय अध्यक्ष जी, इसीलिए ये वहां बैठे हैं और 20 साल तक वहीं बैठने वाले। Honorable Speaker, sir,
in the course of the debate today, some points were made by members of the opposition. I would like to respond to some of them. We were asked, why did you stop at this time? Why did you not go further? Please see who's asking this question. This question is being asked by people who after 26/11 felt that the best action was inaction. Now I would like sir to read out, because one member said, nowadays BJP members like reading from books. You get the truth in books. Sometimes you don't like what we read in books. So let me read out, sir, two excerpts from a book by the National Security Advisor of the UPA government. After 26/11, a chapter, this is a book called Choices. He says, on sober reflection and in hindsight, I now believe the decision not to retaliate militarily, but to concentrate on diplomatic, covert and other means was the right one for that time and place. This is what he says. But did he even do that? Because 26/11 happened in November of 2008. What was the reaction? The reaction was Sharm el-Sheikh. Was that diplomatic? Was it covert? Was it military? Now what did Sharm el-Sheikh do? In Sharm el-Sheikh, the then government and the Pakistani Prime Minister agreed terrorism is a main threat to both countries. Now, today, sir, people are saying, America is hyphenating you, Russia is hyphenating you. That is what I heard Dipinder Huda ji say. Hello, you are hyphenating yourself. I mean, you did not need a foreign country to say, please link India to Pakistan. Your own government was saying, India and terrorism is a main threat to both countries. And then they said, terrorism should not be linked to the composite dialogue. And worst of all, they accepted a reference to Baluchistan in that. Now, here is a country reeling after 26/11. And you are equating Baluchistan and 26/11, what happened in Mumbai, and you are saying that the perpetrator and the victim have both got a problem. And then now you are asking me, why didn't you go further? People who did nothing are asking a government which did so much, saying, why didn't you do more? Now, you might think, sir, that this is a one-off, but this is a habit, because this is the thinking in that part of the house. Some years ago, there was, if you remember, sir, the Mumbai train bombing. The Mumbai train bombing happened in July of 2006. In September of 2006, 3 months after the Mumbai train bombing, at Havana, the UPA government, with its Pakistani counterpart, condemns all acts of terrorism as though we are both again equal, and agrees that it's a scourge that we need to effectively deal with together. And then they directed again resumption of dialogue. So what I want to highlight is, for people who did nothing to have the temerity, the gumption today to ask a government which did so much, which brought down Bhavalpur and Muridko, to say, why didn't you do more? I think it's extraordinary. Now sir, we also heard from one of the early speakers saying we are now facing a two-front, and that the leader of opposition has been warning us about two-front. Now all I can say, sir, is the person who said it, and maybe the leader of opposition, must have missed their history lessons in school. I'll tell you why. Because I would like to walk you through the history of this two-front. The two-front started because of something called POK. POK was created in 1948-49 by the government of this country by not completing the job of what was to be done. Now, sir, the House should note these dates.
The two fronts started 1963 when the Shaksgam Valley was ceded by Pakistan to China as a result of an agreement. Then in 1966, the Karakoram Highway was agreed upon, which took 20 years, was completed in 1986. Now, references were made to China-Pakistan military collaboration. So when did this collaboration start? I'll give you the year, 1966. In 1966, the first Chinese military supplies went to Pakistan. When did nuclear collaboration start? 1976.